देखिए मेरे पास में एक प्रॉब्लम है that evaluate the determinants 4 5 6 and second row है 5 6 4, थर्ड रो है 6 4 5। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमें जो डिटरमिनेंट निकालना है वो प्रॉपर्टी की मदद से निकालना है। ओके, सो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले आप जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसको आप नोट डाउन करेंगे। सो सॉल्यूशन दैट मैट्रिक्स A equal to let mod of A equal to 4 5 6 5 6 4 and 6 4 5. Okay, so you know that if you apply that R3 equal to R3 minus R2, then your system will be, let's check, and so your system will be mod of A will be equal to, so R3 is going to change, so 4 5 6 remain unchanged and 5 6 4 again they remain unchanged, so the R3 will be 6 minus 5, that will be 1, and 4 minus 6 that is a minus of 2, 5 minus 4 that will be again 1. Okay, again we can apply that R2 equal to R2 minus R1, so that will be mod of A will be that R1 unchanged, that is 4 5 6, and it will be 5 minus 4, that will be 1, 6 minus 5 again it will be 1, and 4 minus 6 4 minus 6 again it will be 2. Okay, so again 1 minus of 2 and again 1. Okay, so the thing is, now if you apply that R2 so if you can think of it, so it will be how much, so if we apply that R1 is equal to R1 minus 4 times of R3, so that mod of A will be, so R3 is a 4, so R1 is 4 and R3 is 1, so 4 times multiplication then minus, so that will be 0. Again this is 5 and minus into minus 2 times of this one, so 4 into 2 that is 8, 8 that will be minus into minus plus 8 plus 5, so 8 plus 5 that will be 13. Okay, again here the R1 is 6, 4 times of this one, so that will be 2. Okay, again, and we can apply the another property also at the same time, that R2 is also equal to R2 minus R3. Okay,
So when you apply both these property to this, that again will be 0, and this will be 1 minus minus का 2, that will be 3, and minus 2 again minus 1, that is a minus का 3. Okay, and the R3 will be unchanged, so 1 minus 2 and 1. So that is basically the final determinant. So if you expand this one, so by the R3 expansion, so if you use the R3 expansion are basically a C1 expansion. So if you used C1 expansion, because C1 has mostly 0 element, so we will prefer the C1. Okay, so we will prefer C1 expansion. So the determinant of A will be, so it will be plus minus plus again, so that will be 13, 2, 3 and minus 3, and that will be again 13 into minus 3 minus 6. So the determinant of A will be equal to, that will be 39 minus 6, so that will be minus 45. So hence the determinant of A is equal to minus 45. So that will be the final answer. ओके, सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से देखते हैं कि हमने क्या किया है यहाँ पर। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में जो यहाँ पे है वो हमने क्या किया, लेट कर लिया यहाँ पे, दैट डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस वन। अगेन हमने यहाँ पे R3 प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, सो R3 माइनस R2 इक्वल टू R3. ओके, सो this is your R2. okay, this is your R1 and this is your R3. okay, so R3 is equated R3 minus R2, so 6, that is R3 means 6 की जगह पे जो वैल्यू होगी वो 6 minus 5 होगी. so we applied this one, so here देखिए R3 की वैल्यू आपकी चेंज हो गई है, so the R3 value is changed. okay, so as per the property the R3 is changed. okay, next property आपके पास में ने क्या लगाई है, R2 equal to R2 minus R1. so here the operation is operating on R2. so देखिए R2 की वैल्यूज आपकी चेंज हो गई हैं, और यहाँ पे बेसिकली आपने R3 की वैल्यू चेंज की थी, तो देखिए R3 की वैल्यू चेंज हो गई है. ओके, सो अगेन आपको समझ में आ गया होगा. यहाँ पर मैं एक साथ दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, R1 में इस्तेमाल कर रहा हूँ और R2 में इस्तेमाल कर रहा हूँ. तो मेरे पास ये आपका R1 है और ये आपका R2 है. सो दिस इज योर R1 एंड दिस इज योर R2. ओके, सो अगेन इस प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल किया, देन आफ्टर हमने एक्सपेंशन किया है इसके रेस्पेक्ट में. ओके, तो जब हम इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे, सो फाइनल हमारे पास में ये C1 एक्सपेंशन किया, बिकॉज द पर्टिकुलर ये आपका C1 है. ओके, ये कॉलम 1 है, सो कॉलम 1 के रेस्पेक्ट में हमने एक्सपेंशन किया है. सो फाइनल आपके पास में जो डिटरमिनेंट है वो ये होगा, और आपने यहाँ पे अप्लाई किया बिकॉज रेस्ट जो एलिमेंट हैं वो आपके पास में 0 है.
So again 0 minus 0, again plus this value. So the 0 minus 0 does not matter, so it means the final answer is this one. So again 39 minus 6, that is equal to 45. So this is the final answer. सो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करनी है ये आपको समझ में आया। सो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल किया है वो प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस है। सो हियर we used property of invariance. So these property are basically property of invariance, property of invariance. Okay, so property of invariance का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है and that is the property number 7. Okay, so property number 7 P7 का हमने इस्तेमाल किया है and that is property number 7. Okay, so उम्मीद करता हूँ कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। यहाँ हमने प्रॉपर्टी को रो वाइज अप्लाई किया है, ऐसे ही आप कॉलम वाइज भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल है। ओके, सो फिर भी दोस्तों अगर कोई क्वेरी या डाउट है तो आप यहाँ पे मुझे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। सो थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, जो कि एक प्रॉपर्टी के थ्रू हम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डील करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड watch the next upcoming video.